So hello everyone. We're starting the last lecture, the economic environment, social environment, and social culture environment. Okay. So today's topic is technological environment. Everyone knows about the technology. Okay. So let's see. So technological environment. Technological is a systematic application of scientific knowledge of practical tasks affect of all types of business. It is basic. Components can be make the business successful or even destroy. It is a rapid development of technological require quick relationship businesses in order to survive in emerging competitive environment and keep up the new trend in the market. So after the individual revolution of the information has been a major significant development in this country. Some of the development in the information technology were innovation of the microprocessor, personal computer, evaluation of the software, and the rapid advances in the field of telecommunication. Okay, so banking sector, one such that uses informations and technological to handle the volume business with the desired level of efficiency, and technological advancement has made of banking very easy, time to time effective, and the internet banking is the most common thing in our banks. Let's see the technological environment. First of all, हम जब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है वो आता है जापान के बारे में। क्यों? क्योंकि जापान इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलप्ड कंट्री। क्यों? जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उनके 5 साल पहले उनके पास टेक्नोलॉजी थी। मतलब अब हमें हम उसके बारे में अगर यहाँ पे थिंक करते हैं तो टेक्नोलॉजी क्या होती है वहाँ पे वो बना चुके होते हैं। मतलब क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ पे आज हम जो वॉचेस यूज कर रहे हैं, जो स्मार्ट वॉचेस है, स्मार्ट हार्ट बीट, जो हम हमारा हार्ट बीट बताता है, जो ईसीजी बताता है, वो उनके पास बहुत पहले से ही था। ठीक है। और अब हम हमारी जैसे कि हम बात करें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, तो उसके अंदर देखिए सबसे पहले ये पार्ट स्टडी के अंदर क्यों आया, मतलब हमारे क्वेश्चन में क्यों है। देखिए हम स्टडी करें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, अगर हम अपग्रेड नहीं होंगे टेक्नोलॉजी के बारे में तो उसका ज्यादा इफेक्ट जो होगा, जैसे कि हम इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी के ऊपर बात करें तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट काय पे होगा, हमारे बिजनेस के ऊपर होगा। अगर हम इनोवेट नहीं किए, हमारी टेक्नोलॉजी हमने इनोवेट नहीं की, चेंजेस उसके अंदर नहीं लाई, तब्दीलियां नहीं की, तो क्या हो सकता है, हमें सबसे ज्यादा इसके अंदर हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो हमें जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट और जैसा टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है उसके हिसाब से क्या होना है, हमें भी चेंज होना है, उसके अंदर हमें चेंजेस लाने हैं। Okay, so the changing technological has helped the international banks to not only exercise the proper control over cost but also expand their business and handle the large number of clients. Bank today have become a center for collection, storage, and processing of the information, gathering the accounting and the books of keeping efficiency and branches by computerizing back office and operations. Okay, so full branch of computerization has setting up to automatic teller machine have enabled the private banks to improve the quality of business, the retail, and the segment. So main part of the technological environment consists of the factor like first research and development. So research and development. If you are not research about the new innovative, you can be handle it of you can survive in technological world. So technological research people through business. देखिए टेक्नोलॉजिकल में रिसर्च और डेवलपमेंट की बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। अगर हम अगर नए टेक्नोलॉजिकल हमने इन्वेंट किए, उसके ऊपर हमने पता चले कि कौन सी टेक्नोलॉजी का कस्टमर तक पहुंचना जरूरी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो टेक्नोलॉजी हाउ टू रीच द पीपल थ्रू बिजनेस, कैसे उन तक हम पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए कि मोबाइल के अंदर भी न्यू टेक्नोलॉजी क्या है कि आपका फेस स्कैन होता है, तो उसके बहुत सारे ऐड भी टीवी में आते हैं। ठीक है, तो उसी बारे में कि क्या करेंगे, हम रिसर्च करेंगे कस्टमर के लिए, जैसा ट्रेंड चेंज हो रहा है उसी हिसाब से क्या करेंगे, हम रिसर्च करेंगे और प्रोडक्ट क्या होगा, हम उसके ऊपर उसको डेवलप कर सकते हैं और उसको डेवलपमेंट में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज इनोवेशन। अब इनोवेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनोवेशन हर टाइम इनोवेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि ओल्ड टेक्नोलॉजी चल रही है। ठीक है, इनोवेशन अभी हर जगह हो रही है। मतलब क्या कि अगर कोई पुरानी टेक्नोलॉजी है, पहले कैसा था कि जो जो लोग थे मोबाइल यूज करते थे सिंपल, जिसके अंदर ना कैमरा होता था ना और ना कुछ फीचर्स होते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी क्या हुई, इनोवेट हुई, उसके अंदर कैमरा आ गया तो कैमरे का यूज कम हो गया। ठीक है, मतलब इनोवेशन होना भी बहुत जरूरी है और उसी हिसाब से हमें हमारे टेक्नोलॉजी का में इनोवेट करना जरूरी है। अगर हमने वही पुराना मॉडल हम बेच रहे हैं मोबाइल का, तो सेल हो पाएगा क्या? नहीं। जो फीचर्स आ रहे हैं उसी हिसाब से हमें क्या करना है, इनोवेट भी करना है हमारा मोबाइल, और हमें उसे उसी तरह सेल भी करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या कि अभी का जो ट्रेंड चालू है, कौन सा ट्रेंड चालू है, कि अगर हम जैसे कि मैंने अभी बताया आपको
कि आप अगर आपके मोबाइल के अंदर सिर्फ अगर एक कैमरा रहेगा जो 16 मेगापिक्सल है और आप उसको सेल करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन बाकी के मोबाइल क्या करें अभी हर एक मतलब वाइड एंगल कैमरा डिफरेंट उसके हिसाब से क्या करें अपना मोबाइल मॉडर्नाइज करें। देखिए नोकिया की एक स्ट्रेटेजी थी, नोकिया ने क्या किया विंडोज फोन में अपने डाला, उनको क्या लगा कि विंडोज डालेगा एंड्रॉइड से अच्छा हमारा फोन सबसे ज्यादा हम बेच सकते हैं। लेकिन क्या हुआ सबसे ज्यादा जो सेल था वो क्या का हुआ एंड्रॉइड मोबाइल का हुआ, उसका ट्रेंड ज्यादा चला। ठीक है, तो उसी हिसाब से उन्होंने क्या किया फिर नोकिया ने फिर वो स्टॉप किया वहां पे और फिर से क्या किया चेंज किया उसके अंदर और अपना मोबाइल वो लोग सेल कर रहे हैं। मतलब क्या कि उन्होंने मॉडर्नाइज नहीं किया कि कौन से इस मॉडर्न टेक्निक के लिए कौन सी जरूरतें हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। सो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि हम सोशल प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि हमें सोशल चेंज के उस हिसाब से भी देखना होगा कि इन्वायरमेंट में कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए जैसे कि अभी सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी सर्विलियंस, ये क्या होता है सोशल ट्रेंड के अंदर बहुत इफेक्टिव होता है। अगर हमारी आसपास भी कहाँ चोरी हुई है हमारी चोरी, तो क्या होता है पता चल जाता है, हम चोरी को जो थ्रेड्स हो रहे हैं जो नुकसान हो रहा है हम इजीली उसको स्कैन कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से क्या है प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम अब जब चाहे किसी से भी कहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, इनोवेशन होने के कारण सो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल इन्वायरमेंट। सो लीगल इन्वायरमेंट मीन्स द लीगल इन्वायरमेंट refer to all the legal surrounding that affect organization activities. It consists of area of the rules of regulations and protection of institutions and process. The legal environment of business consists of laws and that regulate the conduct of the business. Some of the important legislation so business has considered as follows. देखिए लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मैंने कहा था कि लीगल इन्वायरमेंट मतलब ऐसा कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको जो लॉ है उसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेशन जो आपके जो लॉ बने हुए हैं उसे आपको क्या करना होगा फॉलो करना होगा। सही है, तो उसके जैसे कि हम बात करें लीगल इन्वायरमेंट के बारे में ही अभी, तो लीगल इन्वायरमेंट मतलब क्या कि जो लॉज बने हुए हैं उसको हम फॉलो करते हैं। सही है, उसके अंदर पहला पॉइंट है फ्रेमवर्क ऑफ लॉ रेगुलेशन एंड कोर्ट डिसीजन। देखिए जो लॉ बने हुए हैं उसको हमें क्या करना है फॉलो करना है। ठीक है, अगर हमने फॉलो नहीं किया तो क्या होता है हमें सजा मिल सकती है। एक कौन डिसाइड करता है? कोर्ट डिसाइड करता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी आपको बताया था कि अगर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्लास्टिक बैग्स आर बैन, तो क्या हो सकता है वो आपको बंद ही करनी होगी, उसको आप चालू नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आपने उसको चालू रखी तो क्या हो सकता है आपको सजा मिल सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एडुकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए आपको नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है रूल्स रेगुलेशन, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, हर वक्त कोई आपको लॉ पढ़ाते नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि नॉट नोइंग द लॉ इज नॉट योर अन एक्सक्यूज। अगर आपको लॉ पता नहीं तो आपको आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं और आपने अगर टिकट नहीं निकाली तो क्या हो सकता है आपने क्या किया रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, तो बाय लॉ तो क्या हो सकती है सजा हो सकती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नॉट नोइंग द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, इसके अंदर आपको कोई एक्सक्यूज बता के नहीं चलने वाला। ठीक है, इट वेरी मच कॉमन सेंस, कॉमन सेंस थिंग, कॉमन सेंस की बात है कि आपको कहीं जाना है आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको टिकट निकालना है। ठीक है, हर वक्त जो लॉ है मतलब जो लॉ है आपको हर वक्त कोई बता नहीं पाएगा कि ऐसे ऐसे करना है या इस तरह अगर आपने लॉ फॉलो नहीं किया तो आपको सजा हो सकती है, या आपको पता होना चाहिए। यही आता है लीगल इन्वायरमेंट के अंदर कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उसी हिसाब से आपको क्या करना है फॉलो। सो नेक्स्ट पॉइंट consumer law. See, they are designed to protect the consumer against substandard and the product that marketing of certain other product in many countries. Promotional activities are subject to various types of control. Example, India advertise of alcohol is prohibited. Similarly, the packing of the cigarette must be contained. Statutory warning of the cigarette smoking is injurious of health. Moreover, the product like drugs, cosmetic, food, and additives should contain full disclosure about the concept. The price is batch number, manufacturing date of expiry date, etc. Also, selling of guns, explosive, and dangerous drugs are illegal of many countries. So, most important part in the consumer law, the consumer we use the product information written on the packet to be aware first. So next point, weighted and measure act. So goods sold should not be under right standard and the weighting equipment should be used to measure goods.
The most important part in the goods it the equipment of the equal to the all act in the parties. So next thing, trade descriptions act. So trade description act, the giving the misleading impression about the product and illegal. The giving the all information about the trade description in act. So next point, Consumers Credit Act. So Consumers Credit Act, according to this act, consumer should be given a copy of the credit agreement and should be aware of the interest rate, length, and loan when taking the loan. Okay. So next part is employee protection law. So employee protection law, government has also passed law to protect the interest employee against unfair discriminations at work and the while applying for the job, so that there are no unfair of discrimination on the basis of race, religion, sex, age, and color. So main part of the employees protection law to protect worker from dangerous machinery, taking the safety, taking some insurance. So next part, worker should be provided with the proper safety equipment and clothing. They giving the clothing. If you are using the hard machinery, they giving the gloves and all. Okay. So next part, a reasonable work to temperature is maintained for the workers. After that, the proper hygienic condition and washing facility are provided. If you are working in a color company, they are giving the all types of clothes and hand gloves and giving the, some water to use your clean your hand and hand etc. So after that, the worker get adequate breaks between the shifts. They're giving the shift wise work. They're not giving the work uh, work at same way or same time. Taking your shift to 8 hours, 9 hours. Okay. So after that, the next point is competitions of law. The business practices of market trades that the governments have and always been the subject to security. The main aim of the competition laws of maintain fair competition is market avoided of monopolistic tenders. The Monopoly Restrictive Trade Practices Act recently amended called Competitions Act of India has enhanced in 2002. The result is India's pressure of globalization and liberalization of the economy. Some important points of the giving the impact of direct in competition of law of the in legal factors. So first is adoption of apologies of pricing policies. After that, the emphasis of the employee safety. Next point is avoid is monopolistic on competitions. And after that, the protection of the environment and the social welfare. Okay. So next point, ecological environment. See the ecological environment, there are many ways of a business can reduce the negative effect of their operation and work with the stakeholder to promote more environmental friendlier practices to minimize the damage to the environment. Business must consider the following activities. The some activities are very important in the ecological environment. So reduce carbon emissions means carbon sending in air. So this temperature in less. So produce or use of lead to the free force of the other greener sources of energy, incorporating cleaner production method in new business and the buildings plants etc. To improve industry recycle program, encouraging the encourage the energy of management schemes, offer free long life and shopping banks of other biosensitive package of products, and ask for the staff or the new ideas for the getting the new innovations techniques. After that, they donate the money from environmental projects that directly affect their stakeholders, and the providing recycle facility, providing tree planting and the urban regeneration schemes are providing in ecological environment. Mostly of see if you are giving the any company of any firm, there is a more of tree. आपने देखा रहेगा कि आप कहाँ पे बहुत जहाँ 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 गए क्या होता है कि शहर से बाहर होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है और उसके आजू बाजू क्या होते हैं ट्रीज प्लांटेशन वगैरह वो लोग करते हैं. ठीक है. So next point is pestle analysis. So what is meant by the pestle analysis? In other words, other detail analyze the microenvironment of the environment as a whole called as pestle analysis. So pestle analysis are certain that they manage the strategy buildings to where the currently stand and the where will produce in the future. So give the differential between the present company and the situation of the futures competitions. So in pestle analysis comes first P,
political environment. So what is meant by the P in pest analysis? Political environment, political factor. So political factor, these factor take into account the political situation of a country and the world in the relative to the country, all policies, taxes, laws, and every tariff that the government leaves of trade fall under this category of factor. So after that, the political factors come. Economic, E means economical factor. So economical factor in economical factors include all determinants of the economical and its conditions, the inflation rate, interest rates, and the monetary physical policies, the foreign exchange rates that affect the import and export of these determine the direction of which economic and the economy and the migrant move. Therefore, the business analyze their factor of the environmental so as formulate strategy. See the economical factor, आपने अपने लास्ट पॉइंट में भी देखा कि इकोनॉमिकल फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या पे होता है हमारी इन्वायरमेंट के, देखो इंटरेस्ट रेट अगर कम ज्यादा होते हैं तो फॉरेन करेंसीज अप एंड डाउन, जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट के अंदर देखा था. तो सेम इन कनेक्ट विद द इकोनॉमिकल फैक्टर्स. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन पेस्टल एनवायरनमेंट. PES. Yes means social factor. So what is meant by social factor? Every country is a different, and every country has a unique mindset. This mindset casts an impact of the business and the sales their produce and the services. The influence experience of the social culture factor that are not within the control of the business can be interest of the failure, the cultural implications, and the general. So demographics and the social lifestyle and domestic structure, all of this, the studied by the companies to understand the market and the consumer is better. जैसे कि मैंने कहा था कि सोशल फैक्टर के अंदर कि क्या होता है इसके अंदर कि आप अगर कहीं दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रेडिशनल अलग होगा. हर जगह का हर एक कंट्री में ट्रेडिशन अलग होता है. अगर जहाँ पे वेस्टर्न चल रहा है वहाँ पे आप ट्रेडिशनल कपड़े नहीं यूज कर सकते, और जहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े ज्यादा यूज होते हैं वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेस्टर्न आप वहाँ पे जाके सेल नहीं कर सकते, या उसी हिसाब से आप ज्यादा घूम नहीं सकते क्योंकि वो कुछ अलग दिखता है. तो उसके अंदर ये बताया गया है आपको कि सोशल फैक्टर्स के अंदर ऐसा होता है कि अगर हमने सोशल फैक्टर मतलब सोसाइटी के हिसाब से हमने हमारी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो क्या होता है, उसके ऊपर हमारा इफेक्ट गिरता है. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज technological factor. So technological is greatly influence a business it change every minute in the therefore companies need to stay connected to integrate and ads when needed. The rapid development technology require quickly reaction by the consumer in order to survive in an emerging competitive environment and keep the new trend in the market. So also these factors are analyzed to understand, follow the consumers, react technological trends and how they utilize for the benefit. देखिए मैंने पहले ही कहा था कि टेक्नोलॉजी क्या है, हर दिन कुछ नई आती है, उसके ना इनोवेट होती रहती है. सो एवरी मिनट सम टेक्नोलॉजी चेंजेस, हर एक मिनट की टेक्नोलॉजी क्या रहती है, बदलती रहती है. उसी हिसाब से क्या करना रहता है, हमें हमें भी उसी हिसाब से क्या करना है, बदलना पड़ता है. इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या करना है, हमें बदलना पड़ता है, नए इनोवेशन लाने पड़ते हैं. तो ये बताया गया है टेक्नोलॉजी फैक्टर के अंदर. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल फैक्टर. जैसे कि अभी बाद में देखा था कि जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ती है लीगल फैक्टर के अंदर, वही बताया गया इसके अंदर भी कि legislative changes occur from time to time and the effect of business environmental. For example, is regulatory body would be set up the regulations for the industrial, then that would be impact of industry and the business and steps and the economical therefore business also analyze the legal development helping the environment. So next point is environmental factor. So what is the environmental factor? The location of countries, influence of the trades and the business, the climate changes, alter of the trade of industrial, of the ways of consumer react of towards certain offering that the launch in the market. The environment factor include geographical locations, climate, weather, and other such factors that are not limited climate and condition. There are many ways the business can be reduced of negative effect of therefore operations and work with stakeholders to promote more environmentally friendly practices. The importance of each of the factor may be different to different kindly industries, but is not impressive of any strategy. Company wants to develop their conduct. The pest analysis is from the fundamental tool of the market planning. Sterilizing the must be carried out of
comprehended market trends and systematic risks is involved. In Pestel analysis, give the overview of the wood situation of the every business conditions. So this follows the Pestel. So next पॉइंट शॉर्ट एनालिसिस. ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. मतलब क्या कि शॉर्ट एनालिसिस यानी हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे थ्रेड्स कौन से आने वाले हैं, ये इसके अंदर हमें पता चलता है. ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस मतलब शॉर्ट एनालाइज इज अ फंडामेंटल स्टेप इन अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. It is a systematic approach to understand the environment influencing the business. Short is the acronym strength, weaknesses, opportunities, and threats. So SWOT analysis is used at the regular intervals. It enables the managers to achieve the performance with ease if the applied at the generate suitable alternatives. This approach provides a systematic analysis of the internal strength and weaknesses of business firm, along with the external opportunities and threats. Short analysis provide a good overview of a weather and overall situation in healthy uncertainty, and short analysis provide the basis of preparing strength and strategy that makes to optimum use of resources the aims of capturing the firm's best opportunities and defense against the threats and the threats of the business. देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बताया गया है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे सामने रहती है, वीकनेस हमारे सामने, मतलब क्या इसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया गया है. मतलब क्या इंटरनल पार्ट के अंदर आता है हमारा शॉर्ट एनालाइज, उसके अंदर है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये है हमारा इंटरनल फैक्टर. सो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आता है हमारा, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे शॉर्ट एनालाइज के अंदर कि सबसे पहले है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ यानी क्या कि हमारा ब्रांड कितना स्ट्रांग है मार्केट के अंदर, ये क्या होगी हमारी स्ट्रेंथ होगी. सही है, और हम कितने लॉयल है हमारे हम ब्रांड के साथ. ठीक है, यह हमारा स्ट्रेंथ के अंदर आता है. उसके बाद है वीकनेसेस. वीकनेसेस के अंदर क्या होता है कि उसका टर्नओवर कितना है, उसके डेटर्स क्या है, उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितना कितना है, उसका स्ट्रांग है वीक है, ये आता है हमारे वीकनेसेस के अंदर. मतलब ये क्या हुए हमारे इंटरनल पार्ट्स हुए, इंटरनल इन्वायरमेंट्स के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कैसी है. उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटीज. अभी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ये है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर पार्ट. अपॉर्चुनिटी तो हमें बाहर मिलते हैं, हम हमारा जो टारगेट है हम बाहर कवर कर सकते हैं, ना कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर. मतलब क्या हमने जो टारगेट बनाए हम कहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बाहर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर. बिजनेस बिजनेस कहाँ पे होता है, बाहर करेंगे. सही है. सो मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज कैसे आ रहे हैं उसको हम देखेंगे. ठीक है, उसके बाद है थ्रेड्स. थ्रेड्स यानी क्या, हमारे जो भाई कहते हैं ना हम धोखे हैं, डेंजर्स, कि हमें आगे जाके कौन से थ्रेड्स आगे मिलने वाले हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स और नया कौन सा इनोवेट करके प्रोडक्ट हमारे सामने लाएंगे जो हम जो वही सेम बेचते हैं फीचर्स के साथ. ठीक है, या कोई फ्लड आ सकता है क्या, मतलब जो भी हमारा आगे जाके नुकसान होगा वो हम देखेंगे कि थ्रेड्स के अंदर कि क्या होता है. यही है हमारा शॉर्ट एनालिसिस. ठीक है, अब हम सो इंटरनल इन्वायरमेंट्स कम आफ्टर दैट. जस्ट स्ट्रेंथ, यस एंड स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने बताया कि दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. सबसे पहले है इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आता है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मतलब जैसे कि मैंने बताया कि हमारा ब्रांड कितना स्ट्रांग है. ठीक है, हम दूसरों से कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, और उसके अंदर आता है हमारे अचीवमेंट्स क्या है. अचीवमेंट्स यानी ISO सर्टिफाइड. इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट के ऊपर क्या होती है, कस्टमर की पॉजिटिव इमेज तैयार हो जाती है. उसके बाद में एडवांटेजेस, जैसा कि एडवांटेज क्या आएगा इसके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मतलब वो कहाँ तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कस्टमर से गुड हमें रिस्पॉन्स मिलेगा. ठीक है, मतलब हम हर जगह हमारा प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. ठीक है, ये आएगा स्ट्रेंथ के अंदर. सो स्ट्रेंथ are the sometimes of company is a good doing and improve our ability to complete strength and enable the companies to gain strategic advantage. It help to internal environment in analyze terms of its resources of the behavior. Strengths are indicated by human resources, financial marketing resources, company. Strength of the marketing organization would include result-oriented managers, effective and campaign, educate marketing budget, product improvement, modification, and innovation of sound of brand image, etc. It's calling strength. So the next point is come weaknesses. So what is mean by weaknesses first? Weaknesses के अंदर क्या कहा था मैंने बाद में कि हमारा हमारा जो प्रोडक्ट है उसके डेटर्स कितने हैं. सही है. उसके बाद में मैंने क्या कहा था, सप्लाई चेन कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, ये इसके आएगा वीकनेसेस के अंदर. और क्या आता है कि हम हमारे जो वीकनेसेस है
उसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि हमारा प्रोडक्ट हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं क्या, अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा। एक एग्जांपल लीजिए आइडिया का, फिलहाल आइडिया की रेंज कितनी बहुत वीक है, तो ये क्या हो गया, उनका वीकनेस हो गया। तो उसके ऊपर अगर काम करेंगे और उसका जो सिग्नल स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या बनेगा, उसका स्ट्रेंथ बनेगा कंपनी का। ठीक है, तो ये आता है वीकनेसेस के अंदर। So weaknesses are competitive deficiency. It is a sometimes of company falls short. It comparison to is a controllable premises. Weaknesses decrease the which create strategic disadvantage. It related to competitors' strengths, weaknesses from basis and internal appraisal. Common weaknesses would be include higher than competitive brands presence, not result oriented of managers, limited marketing research, poor public image and financial position and outdated of technology etc. जैसे कि मैंने बाद में कहा था कि अगर हमारा वीकनेस प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आएगा, ठीक है, पोर रिस्पॉन्स रहेगा, तो हमको क्या करना है, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। अगर वीकनेसेस ऐसे चलती रहेगी तो क्या कर सकता है, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, आगे जाके बंद हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी अपॉर्चुनिटीज क्या है कि बिजनेस के अंदर आप मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या कौन से अपॉर्चुनिटीज है कि हम उसको कवर कर सकते हैं। जैसा कि कोई नया प्रोडक्ट आया मार्केट के अंदर तो हम क्या करते हैं, उसकी एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम बेच सके। अगर कोई कहाँ पे इवेंट चल रहे तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट की जगह वहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, प्रमोट करते हैं वो प्रोडक्ट उस इवेंट्स के अंदर। सो हमें वो अपॉर्चुनिटीज क्या करना है, हासिल करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, हमारे प्रोडक्ट सेल कर सके बिजनेस के अंदर। सही है, सो अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या था कि अपॉर्चुनिटीज आर द एक्सटेंडर टू द बिजनेस, they are the passing phase in a business does to take advantage of uncontrollable presence. Favorite opportunities enable company to consider the strength is position opportunities would be include tax holidays and competitive market become technological innovation ability to easy bank loan etc. Okay, so the next part, so next point is trades. ट्रेड्स मतलब क्या होता है कि हमारे जो कौन से आगे जाके हमें धोखे मिल सकते हैं बिजनेस के अंदर, हमारे कॉम्पिटिटर्स। सही है, उसके बाद फ्लड, थेप्स, जो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर होता है जो हमें हमारा टारगेट करने से रोके, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेड्स कहते हैं। सही है, सो थ्रेड्स आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस, देयर इज हार्डली एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेड्स, इट इज unfavorable condition in the organization environment. A company that is not competent to handle risks face threats. Managers can visualize that threats exist, but there is very little one to save the business from the threats. Threats include unethical competitors, aggressive and militant trade unions, advise government policies, change in consumer behavior, etc. So threats are come in external factors, right? So अब मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो आता है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अंदर, सो मैं एग्जांपल दूंगा आईफोन का। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बहुत बड़ी है। ब्रांड वैल्यू कितनी है, बहुत बड़ी है। प्रोडक्ट बहुत ही स्ट्रांग है। सही है, ये क्या हो गया, उसका स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, उसके बाद वीकनेस। अभी उनकी वीकनेस क्या है, ब्रांड वैल्यू बड़ी होने के कारण उनका जो वो लोग सेल कर रहे हैं उसका प्राइस भी कितना है, बहुत ज्यादा है। मतलब हर कोई क्या अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब बाकी के उनको क्या वीकनेस है, लेकिन उन्होंने अपनी वीकनेस कैसी स्टेट में तब्दील की देखी है। उन्होंने क्या किया, जहाँ पे आईफोन एस 10 प्लस प्रो जहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया, उसके साथ अभी उन्होंने क्या लॉन्च किया, एसी लॉन्च किया। मतलब क्या कि बाकी की जो कंपनी है जो उसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, तो उसी रेंज में उन्होंने और एक फोन लॉन्च किया। मतलब उनकी ब्रांड वैल्यू कम नहीं की उन्होंने, ब्रांड वैल्यू सेम ही रखी, लेकिन उसके साथ दूसरा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया कि आपने वो वीकनेसेस को क्या करें, अपने स्ट्रेंथ में तब्दील कर सके। सही है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने अपॉर्चुनिटी सारी बहुत सारे गेन किए। जैसे कि मैंने बताया कि बाकी के प्रोडक्ट के साथ उन्होंने क्या किया कि अपना दूसरा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसको क्या किया, अपॉर्चुनिटीज में तब्दील किया। मतलब क्या, बाकी के भी कस्टमर क्या हो, अपने यहाँ अट्रैक्ट हो, इजीली वो सेल कर सके वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया। उसके बाद जब भी नया उसका कोई प्रोडक्ट आता है, वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। हर एक कस्टमर तक वो कैसा प्रोडक्ट पहुंचता है, उसकी ब्रांड वैल्यू बड़ी होने के कारण कैसा है, अगर हर एक कस्टमर सेटिस्फाई है उसको यूज करके। ठीक है, सो नेक्स्ट इज थ्रेड्स। इसके अंदर धोखे क्या आ सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि कॉम्पिटिशंस बढ़ गए, तो उन्होंने क्या किया, बाकी के कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं कि आईफोन के मुकाबले वही फीचर्स देके उन लोग क्या करें, दूसरा फोन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आईफोन एक हद तक ही अपने प्राइस क्या कर सकता है, कम कर सकता है,
जैसे कि अभी नाउडिज चालू किया, उन्होंने 5000 लेस कर दिया, उसके नीचे वो अपना ब्रांड वैल्यू कम नहीं कर सकते, मतलब उनके लिए वो धोखा निर्माण हो सकता है, ब्रांड वैल्यू ये मतलब इमेज कम हो सकती है उनकी। तो बाकी के मोबाइल क्या करते हैं, कम से कम रेंज में अच्छे फीचर्स देते हैं, तो इनके लिए धोखा है, लेकिन वो उसके ऊपर काम करके अपना क्या करते हैं, पूरा स्ट्रेंथ बना लेते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। So, corporate level strategy, a business unit has undertake different types of complex activity in problematic situation. A single strategy is not sufficient and sometimes does not work of all. So, company has to purpose multiple strategies at different levels. Corporate level strategies, corporate strategies are basically about the decisions and related to the allocating the resources from the different business and the different firms. So transferring resources from one set of the business of others and managing and nurturing the set of business or portfolio in business life. So these decisions are taken so that the overall corporate objective are the achieve the corporate level strategy help to exercise to choose the direction and that the organization adopt this strategy is overall plan action of these activities of functioning performed by the business firms. So the plan of the objective of company allocating the resources and coordination among different levels. देखिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी मतलब क्या, सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या होता है, कि जो कंपनी के प्लानिंग, जो कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव होते हैं, विजन होते हैं, मिशन होते हैं, उसके अचीवमेंट के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी कहते हैं। सही है। सो वो प्लानिंग अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी हो या शॉर्ट टर्म के लिए भी हो, तो उसको जो अचीव करने के लिए हम जो उसके ऑब्जेक्टिव को पूरे करने के लिए जो प्लानिंग ही करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रेटेजी। सही है। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट कितना यूनिक है, आपका आपका कॉम्पिटिटर के पास जो प्रोडक्ट नहीं है कितना यूनिक है हमें देखना है। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या, इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, जो हमारे उसकी यूनिक फीचर्स उसके अंदर है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें दूसरों से सर्वश्रेष्ठ बनाता है ऐसा। तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ इसके अंदर आईफोन का। इसके अंदर क्या होता है कि आईफोन के मोबाइल कैसे होते हैं, इनके अंदर सिक्योरिटी, आईफोन के आप सबको पता है कि सिक्योरिटी कितनी अच्छी दी है उसके अंदर, जो बाकी के मोबाइल के अंदर नहीं है। तो क्या करता है ये प्रोडक्ट आईफोन सबसे सर्वश्रेष्ठ मोबाइल में से एक माना जाता है। ठीक है। उसका कैमरा क्लैरिटी बहुत अच्छी है। हाँ मतलब क्या कि उसका एक ब्रांड है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बाकी जो मोबाइल्स कंपेयर करेंगे तो सबसे क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ उसको माना जाता है। तो कौन से यूनिक प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उसे को ही हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। मतलब क्या कि जिसके अंदर हम हमारा एडवांटेज गेन कर सके, जो दूसरों को हम बता सके कि हम ऐसा फीचर्स इसके अंदर दे रहे हैं जो बाकी किसी के पास नहीं है। सही है। और हमारा प्रोडक्ट जिसके सबसे ज्यादा जिसका सेल होता हो, जिसका सबसे ज्यादा हमें उसका एडवांटेज मिलता हो, ऐसा प्रोडक्ट के लिए हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपांशन एंड ग्रोथ। सी एक्सपांशन मतलब क्या होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं, हमारा बिजनेस एक्सपांड करते हैं, उसको ग्रोथ अच्छी मिलती है। ठीक है। सो ग्रोथ को हम कैसे बोल सकते हैं कि देखिए ग्रोथ मतलब क्या होता है कि स्ट्रेटेजी एम at the winning larger market share even the expenses of short term earning in the growth of strategy. For example, Nirma Limited started from a very small company and today is a famous detergent powder, right? So after that, Reliance Industry also started from textile products to petrol textile products and petroleum industry. So now there's telecom industry, ad labs, and Reliance India, Media, Work, and various of others. Okay. After that, the product expansions are comes. A small company maybe also expand its our product line or add new features to increase its the sales and profit. When small company employ product expansion strategy, also known as product development, the continue selling within the existing market. A product expansion growth strategy often works when the technological start of change. After that, this come market presentation. If your product is good, you can advertise. Okay. After that, the most small companies also doing advertisement. And the one growth of strategy in business market presentation, a small company uses market presentation strategy
when it decide to market existing product within the same market it has been using. ओके देखिए इसके अंदर क्या बताया कि एक्सपेंशन के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आप क्या करोगे, उसे एक्सपांड करोगे, हाँ बिजनेस को आप एक्सपांड करोगे, मतलब क्या करोगे, आपके फ्रेंचाइजीज रहेंगे, ठीक है, आपको जहाँ से प्रॉफिट का सोर्स ज्यादा हो रहा है, लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो क्या करोगे आप उसके अंदर और ज्यादा एक्सपांड करेंगे अपना मार्केट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अभी सबसे फेमस एग्जांपल है केएफसी, ठीक है, ग्लोबली है। उसने क्या किया कि उनका प्रोडक्ट बहुत चल रहा है, कि डिमांड ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो क्या करे, फ्रेंचाइजीज ओपन करे हर एक जगह, बड़े बड़े मॉल में देख सकते हैं आप। तो उसी से सिलसिले में है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, अच्छा होना, उसका प्रेजेंटेशन। हम अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसका एड देंगे, ठीक है, बेस्ट प्रेजेंट करेंगे कस्टमर के सामने, उसके फीचर्स बताएंगे क्या होंगे उसके अंदर, ठीक है, या उसका उसका फ्री सैंपल के लिए, टेस्टिंग के लिए भी दे सकते हैं प्रोडक्ट। मतलब कि हम कैसा प्रेजेंट करते हैं हमारे ऊपर है कि हम लोगों को कैसा हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा प्रेजेंट करेंगे, कैसा एक्सपांड करेंगे, कहाँ उनकी तरफ उनका न्यू एड कैसा पहुंचेंगे, मतलब हर एक विलेजेस तक, ना कि सिर्फ बिग सिटीज में, कि हर एक विलेजेस तक हम वहाँ प्रोडक्ट हमारा कैसा पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया डिटर्जेंट के बारे में, सबसे पहले डिटर्जेंट क्या कहता है, उन लोग ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि स्मॉल स्मॉल पैकेट में ₹1 ₹2 में वो क्या करते हैं, सेल करते हैं, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट आप हर एक यूज कर सकता है, जहाँ पे हम फ्री दे सकते हैं वहाँ पे वही दाम में ₹1 या ₹2 में हम स्मॉल सेशे बना के, जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा हर एक घर में पहुंचे, ये होती है स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एक्सपांशन। So product expansion, a small company may be also expand a product line or a new features to increase sales and profit. When small companies employ product expansion strategy, also known as product development, they continue selling within the existing market. Product expansion growth strategy other works when technological start of the change. ठीक है, उसके बाद है So expansion and growth underscore. The next point is a market expansion. So a market expansion growth strategy, often called market development and current product in a new market, the several reason of a company many consist of growth within the current market. If a business does not find new market and new products, it cannot increase sale or profit. A small company may be also use of make expansion strategy if they find new uses from its product. For example, a small distributor that sell the retail stores may be discovered that factory worker also use of its product. After that come diversification. So diversification of the part of the growth strategy in business is include diversification where a small company will sell a new product or new market in the new market. This type of strategy can be very risky through small company will need to plan carefully when using a diversification growth strategy, and market research is essential because company will need determine its consume the new product will be potential like from the new products. So that's come in acquisitions also. Some acquisitions are growth strategy in business can be also include an acquisitions and the company purchase another company to expand its operation. A small company may use these types of strategy to expand its product line and enter the new market. So next point is stability. So what is mean by stability? Stability strategy. मतलब क्या होता है इसके अंदर कि हम इसके अंदर कैसे रहते हैं, देखिए इसके अंदर ही है स्टेबिलिटी नाम के अंदर ही कि हम इसका मतलब होता है कि स्टेबल रहना, एक मार्केट के अंदर स्टेबल रहना। अगर हमें किसी चीज के अंदर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, न्यूली प्रोडक्ट निकालेंगे क्या, नहीं निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हर एक ही जगह पे हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट देखते हैं कि हमने अगर नई फ्रेंचाइजी निकाली है, अगर हमको वहां से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, वो फ्रेंचाइजी बंद करेंगे, फिर देखेंगे प्रॉफिट का स्तर कहाँ पे है, और उसके अंदर भी हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट एक जगह जाके स्टॉप करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने प्रोडक्ट स्टॉप किया तो जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे हम इन्वेस्ट करने से क्या करेंगे, खुद को रोकेंगे। ठीक है, और हमारा जिसके अंदर हमें प्रॉफिट भी रहा है वो सिर्फ हम प्रोडक्ट क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू रखेंगे। ये होता है स्टेबिलिटी के अंदर। सो यह है स्टेबिलिटी की। सो जैसे कि मैंने बात की स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के बारे में, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी जैसे मैंने हमें स्टेबल रहना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने कोई भी डिसीजन फास्ट किया तो क्या होता है, हमने पहली जगह जाके इन्वेस्ट जहाँ फास्ट किया तो क्या हो सकता है, हम वहाँ पे स्टेबल नहीं सकते, हमारा बहुत सारा उसके अंदर लॉस हो सकता है।
ठीक है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के अंदर आता है द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफ स्टेबिलिटी इज एडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इज अटेम्प्ट when this attempt the incremental improvement of its performance by marginally changes of one or more alternatives in business term their respective customer group customers and functions and alternative technologies either single or collectively. So stability strategy refer to the company to policy continue the same business with the same objective. When a product is well expected has the brand value market, the company would be want to expand our market based on particular segment over and components. The main important point in the stability, when we need the stability strategy, the main important point, it is continues to serve the customers if the same product or services market in the function sector. It made of strategic decision focus and an increment improvement function of performance. The focus of the on maintaining and the developing competitive advantage with the present resources of the market requirements. So these are come this stability strategy. So main points or types of stability strategy. First is pause and process. Pause and process with the cost strategy. इसके अंदर क्या होता है कि ये स्ट्रेटेजी के अंदर अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो इसके अंदर सडनली कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको बंद करेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, हम थोड़ी टाइम के लिए उसको पॉज देंगे, यानी थोड़ी टाइम के लिए उसको रोकेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी बीच में प्रॉब्लम आया था मैगी के अंदर, बोल रहे थे कि कुछ मैगी के अंदर प्रॉब्लम मतलब कि कुछ था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, हेल्थ इश्यूज वगैरह, सही है। तो क्या हुआ, उन्होंने मैगी प्रोडक्ट बंद नहीं किया, उन्होंने क्या थोड़े टाइम के लिए पॉज लिया, मतलब उसके अंदर देखा कि क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने फिर साबित किया कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर उससे उन्होंने क्या किया, अपना प्रोडक्ट बेचना चालू किया, मतलब वहां पे उन्होंने खुद को रोका वो प्रोडक्ट बेचने के लिए। उसके बाद में उन्होंने फिर से चालू किया, जैसे कि स्टार्टिंग में अभी आईफोन 10s आया था, सही है। तो आईफोन 10s के अंदर भी क्या होता है, उसका बैटरी का प्रॉब्लम बोल रही थी कि बहुत लोग बैटरी उसकी गर्म हो रही है, मोबाइल पीछे से गर्म हो रहा है, तो उन्होंने वो बेचना क्या किया, बंद नहीं किया, प्रोडक्ट को स्टॉप नहीं किया, क्या किया उन्होंने, उसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया और उसने आगे प्रोसेस फिर हुई उसके साथ अपना बिजनेस आगे रन किया। तो यही होता है पाउज एंड प्रोसेस विद कॉजन स्ट्रेटेजी के अंदर, कि अब ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना होगा, वो प्रोडक्ट आपको बंद नहीं करने का, आपको क्या करने का है, थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सही है। मतलब उसके अंदर अगर सच में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम प्रॉब्लम को सही से रिपेयर करेंगे, उसको सही बनाएंगे और आगे हम क्या करेंगे, फिर से वो प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे। सो ये होता है पाउस और प्रोसेस विद क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। So pause and growth strategies. It means some organization produce stability strategy for a temporary period of time until the particular environment situation changes, especially if have been growing too fast and in the previous period. जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम क्या करेंगे, जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसके अंदर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो हम थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे और फिर से उसको हम प्रोसेस में लाएंगे, ठीक है। और एक बात इसके अंदर आती है कि अगर हमने कोई नया बिजनेस सेट किया, ठीक है, सपोज मैंने अगर कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस नया चालू करने जा रहा हूँ, लेकिन इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसी है कि मैं वो अभी फिलहाल चालू नहीं कर सकता, मेरा पूरा प्लान रेडी है, ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी एग्जांपल ले लो कि अभी कोरोना में रेस्टोरेंट्स बने और इसी टाइम पे अगर मैंने मेरा बिजनेस सेट करना चालू किया तो मुझे प्रॉफिट वो नहीं देगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरी स्ट्रेटेजी पूरी तैयार है, मेरा पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, लेकिन मैं उसके लिए थोड़ी इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छी होने तक मैं क्या करूंगा, थोड़ा उसका वेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं मेरा जो सब प्रॉब्लम खत्म होने के बाद मैं मेरा बिजनेस चालू करूंगा। सो यही होता है पॉज और प्रोसेस स्ट्रेटेजी के अंदर, समझ में आया। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज no change strategy. So no change strategy is a decision to do nothing new, continue current operation and policies for the foreseeable future. If there are no significant opportunities or threats in operating in the environment or in any problem of major in new strengths and weaknesses within the organization of no new opportunities of threats and susceptible of new may be decide to be anything of new product. सो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हमें अगर हमारा प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट दे रहा है तो हम इसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज्यादा है, सही है। तो हमारा कोई इसके बाद थ्रेड्स नहीं दिख रहा है हमें कि हमें कोई थ्रेड्स होगा फ्यूचर में, तो नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेटेजी के अंदर चेंज नहीं करेंगे, सही है। या हमारा कोई कॉम्पिटिटर सेम फीचर वाला प्रोडक्ट सामने नहीं ला रहा है, ठीक है, तो अगर हमारा प्रोडक्ट सही है, सही उसका प्रॉफिट हमें अच्छी तरह से मिल रहा है
तो हम एक प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं करेंगे। अगर हमने चेंज किया तो जो हमें अभी प्रॉफिट फिलहाल मिल रहा है शायद वो भी हमें आगे जाके ना मिल सकता है। तो इसलिए यही ये स्ट्रेटेजी है, नो चेंज स्ट्रेटेजी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। सो नेक्स्ट इज प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। अभी इसके अंदर क्या है प्रॉफिट स्ट्रेटेजी के अंदर, कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रहा है वो आपको चेंज नहीं करना है, उसके अंदर कोई आपको इनोवेट नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर अगर उसके अंदर कोई अपडेशन है तो आपको अपडेशन ऑन टाइम करना होगा, तो आपको उसके अंदर प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, और इसके अंदर आता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो मार्केट में रन नहीं हो रहा है और कॉम्पिटिटर्स का मतलब जितना कॉम्पिटिटर्स वो प्रोडक्ट अपना बेच रहा है उतना हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, तो हम इसी टाइम पे क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं करेंगे, वो प्रोडक्ट को स्टॉप करेंगे और उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट लाएंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रॉफिट स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है, सो प्रॉफिट स्ट्रेटेजी इज एन अटेम्प्ट टू आर्टिफिशियली मेंटेन प्रॉफिट ऑफ रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर rather than the announcing the company's poor position to the shareholder and other investors. And last to be management may be temper of the follow of the strategy. And sometimes we need to stop the product and we are introduce our new product in market. ये होता है प्रॉफिट